Hello friends, welcome back to my channel. Today's topic is very important. Don't translate Hindi to English. Speak naturally. Most learners make one big mistake. The first thing in Hindi, then try to translate every sentence into English. The result? English sounds slow, broken, and unnatural. When you translate word by word, your English doesn't sound right. Example, मेरे को भूख लगी है. To me, hunger has happened. Sound wrong and funny. Correct, I am hungry. Because your brain is busy translating. Speak becomes very slow. And many times the sentence is completely wrong because Hindi and English follow different rules. English is a separate language with its own system. If you try to use Hindi rules, English will always sound broken. Imagine playing cricket but following football rules. The game will never work. That's why translating is only a temporary solution. Real fluency will never come this way. So what is the solution? What is the solution? So speak directly in English without translation. Think number one, think in English. Make small sentence directly in English. एग्जाम्पल इंस्टेड ऑफ थिंकिंग आज बारिश हो रही है तो दिमाग में सोचो इट इज़ रेनिंग टूडे. जस्ट थिंक डायरेक्टली इन इंग्लिश इट इज़ रेनिंग टूडे. नंबर टू, नेम थिंग्स अराउंड यू इन इंग्लिश. बिल्ड अ हैबिट. दिस इज़ अ फैन, दिस इज़ अ चेयर, दिस इज़ अ ड्रिंक वाटर, आई एम ड्रिंक वाटर. यूज ready-made phrases. Native speakers don't translate. They use natural chunks. Example, long time no see. By the way, I'll get back to you. Practice with small talk. Talk to yourself in English, no Hindi involved. I woke up late today. I need to buy groceries. Translation method. हिंदी में कहता क्या कहता है, मुझे पसंद है चाय, मुझे पसंद है. तो उसको अगर वर्ड बाय वर्ड इंग्लिश बोलोगे तो क्या होगा पता है? टी इज़ लाइक्ड बाय मी, ये होगा. और नेचुरल जो परफेक्ट इंग्लिश है वो बस एकदम थ्री वर्ड्स का. आई लाइक टी, बस. और पता है, और दूसरा है कि वो मुझे याद आती है. अगर इसको वर्ड बाय वर्ड इंग्लिश के साथ हिंदी में वर्ड बाय वर्ड ये मिलाओगे तो क्या बताऊँ, सी कम्स इन माई मेमोरी. अजीब नहीं लग रहा है, फनी टाइप का. और परफेक्टली है पता है क्या है मेथड, आई मिस हर. सी द डिफरेंस. देखो कितना डिफरेंस है. नेचुरल इंग्लिश इज शॉर्ट, सिंपल एंड फ्लुएंट. And tips to train your brain. Keep 5 minutes daily for English only. Time even if you make mistake, don't switch to Hindi. Understood, brother? My sister, when you're reading English books or articles, avoid translating every word. Try to understand the meaning from context. When watching English movie or videos, keep subtitles in English, not Hindi, and write a daily journey in English. Simple lines are enough. Today I was tired, I cooked food, I talked with my friend. And remember, English is a tool, not magic. ये रखना याद बहुत ज़रूरी है. इंग्लिश है टूल है, कोई ये नहीं कि एक दिन पढ़ लोगे आ जाएगा. इसको रोज करना पड़ता है, एक दिन करके. एंड फर्स्ट, अवॉइडिंग ट्रांसलेशन फील डिफ़िकल्ट. मुझे पता है कि डिफ़िकल्टी आएगी बहुत, मतलब पहले में, बट विथ प्रैक्टिस
your brain will automatically start thinking in English. One day you will notice you are speaking English smoothly without translation. That is the real fluency. So friend, today's main point is stop translating, start thinking in English. If you found this helpful, like, share and comment. Write one sentence in English in comments without translating. I will check it. So you in the next video keep practicing and stay. Nice to meet you. मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.